गुड इवनिंग पिला माने आज आम करवा टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। सो जल्दी जल्दी तुम मैंने जॉइन कर जाओ। को मैंने लाइव रे अच्छो जो मैंने लाइव अच्छो ना टिके कह दियो। अच्छा सत्य एंड रूपश्री ओके ओके ताले हमें स्टार्ट करिया फर्स्ट क्वेश्चन रो which unit is useful in relating the concentration of solution with its vapor pressure. So we know the small fraction will be the correct answer. Why it will be the correct answer? As we know the formula that when the vapor pressure is directly proportional to mole fraction, so the option A will be the correct answer. Now let's go to question number 2. Value of Henry's law constant, that is this is Kh, is greater for the gases with higher solubility, greater for gases with lower solubility, constant for all gases at all temperature and independent of nature of gases. What will be the correct answer of this question? A, B. So when the greater will be gases with the low, it will be the solubility will be lower. जेतेबेले कोन हो ना तमरो गैस रो गैस अधिका हे जीवो सेतेबेले कोन हो solubility slow होबो. So answer will be B. Next, coming to question number 3. Which of the following condition is not satisfied by an ideal solution? अच्छा, ideal solution में कौन कौन condition था? Delta H mixing 0, delta V mixing 0, then Raoult's law is obeyed, formation of an azeotropic mixture. अच्छा, first one is we know that del H mixing, enthalpy of mixing is 0. Yes, correct. But the question is not satisfied. Then del V mixing is also 0, correct. Raoult's law is obeyed. Yes, it is also correct. Formation of an azeotropic mixture. This is the property of non-ideal solution. So the answer will be D. ठीक अच्छी? Very good. जो मैंने आंसर दो जो. Then coming to question number 4. Which of the following liquid pairs shows a positive deviation from Raoult's law? Acetone and chloroform, benzene and toluene, acetone and carbon disulfide, phenol and aniline. कौन है तार आंसर? B, D,
सी कोटा हबो जल्दी जल्दी को सी yes C will be the correct answer acetone and carbon disulfide अच्छा एथरे तमरो गोटे होची कोन सॉल्यूट के तमरो रहउची आ सॉल्वेंट के रहउची को जल्दी एंड कोन पई एटा हबो जदी कहउछ ऑप्शन सी तले कोन पई हबो नॉर्मली एटारे कोन हबो ना तमरो वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन हबो ठीक अछि एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड भितरे सो सेटा तमरो कोन हबो इट विल शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ ऑप्शन सी विल बी करेक्ट नेक्स्ट दिबा क्वेश्चन which of the following pairs form an ideal solution n hexane n heptane chloroform acetone ethanol water नाइट्रिक एसिड एंड वाटर कोटा ठीक हबो जल्दी जल्दी को कोटा ठीक हबो ए अच्छा तमर एटा रहले इथानल वाटर नाइट्रिक एसिड एंड वाटर क्लोरोफॉर्म वाटर एंड एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन आ दिटा भीतर सिमिलर के तुमको लागुची सिमिलर हाइड्रोकार्बन या फिर सिमिलर ग्रुप रह के एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन यस सो दिस विल बी this pair will form an ideal solution colligative property next question ready question number 6 easiest question colligative properties depend upon nature of solute particles number of solute particles in solution physical properties of solute nature of the solvent only कोटा हबो तमे सब बेले पढ़ी के आस्थिबो अच्छा तमे आगे आंसर को देन मु कहिबी बी कोटा हबो बी ओके सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रे हमें पढ़ितिबा दिस इज एटा गोटे एमिदिया प्रॉपर्टी जोटा कि डिपेंड करबा काहा ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर डिपेंड करबो नो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिपेंड करबो ना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन यस नेचर ऑफ सॉल्वेंट ना तमे जहां भी नियो दीटा को मिसे देले चलिबो बट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर एटा सब बळे के डिपेंड करबो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यस वेरी गुड जो माने आंसर दउचो यस श्रुति सूरज शुभस्मिता वेरी गुड so that means तमर concept बहुत clear अछि question number 7 which of the following is not a colligative property option A osmotic pressure option B elevation in boiling point C optical activity depression in freezing point जल्दी जल्दी को सी ओके इतिश्री सी श्रुति सी प्रियंका सी शुभस्मिता सी ओके नम्रता सी ओके सो हमर चारिटा अछि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यस फर्स्ट वन होची कोन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सेकंड वन इज एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड आ मित्र कोडा नै ऑप्टिकल एक्टिविटी ता तमर पढिबो केते बेले कायरल मॉलिक्यूल्स रे तरे तमे पढिबो यस तमे तरे पढिबो आइसोमेरिज्म सेते बेले एटा पढिबो कोन ऑप्टिकल एक्टिविटी यस but osmotic pressure elevation in boiling point depression in freezing point these three are coming under the colligative property so option is C because it is given not ready next question ko jiba question number 8
Which aqueous solution has the highest boiling point at 1 atm? जल्दी जल्दी तमे रेस्पॉन्ड करो. C. फर्स्ट ऑप्शन रे अछि तमरा 0.1 मोल यूरिया, 0.1 molar NaCl. This one is 0.1 molar glucose, 0.1 molar BaCl2, barium chloride. This is BaCl2. कोटा हबो ऑप्शन C. C B कोटा को C. अच्छा तमे जानी छो जे यूरिया और ग्लूकोज these all are the non electrolytes. Yes, so आर I value केते आसीबो? I value केते आसीबो? 1. NaCl रो मुझे I value बाहर करिवि NaCl. Yes, it will dissociate into Na plus plus Cl minus. So केते रहउजी ये गोटे. Yes, initially गोटे थिला तो I value केते हे जिवो? After dissociation, then before dissociation, 1 plus 1 divided by 1, so this is 2. Yes, for NaCl I value will be, your Van Tau's factor value will be kete 1. BaCl2 ପାଇଁ କେତେ ବାହାରିବ? BaCl2 ପାଇଁ କେତେ ହବ କିଏ କହିପାରିବ? Yes, प्रियंका D. केते हबा वैल्यू? So this will be BaCl2 माने म कोन अछि? Barium अछि, आउ के अछि? Chlorine अछि. Yes or no? Ba2 plus 2Cl minus. So this is 2, this is 1. केते होची I value? I value केते हबो किए कहबो? Yes, I value 3. Priyanka, very good. So जदि I value मोर 3 हैला ताले कोटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करिवो जार I value जते अधिका? Yes or no? I value कार अधिका? यदि बैरियम क्लोराइड यदि अधिका बाहरुची Van Tau's factor value, then सेटा अधिका हबो हां कि नहीं? So the option will be D. Option is D. Next question को जिबा. The Van Tau's factor I, this is I, for a dilute aqueous solution of K3FeCN6. Okay, let me write this one. मते लिखि दोछि तुमको. एटा होछि K3FeCN रो होल 6. एटा तमर होछि ओटे कॉम्प्लेक्स. एटा तर डिसोसिएट हबो कोन दबो? 3K plus आउ कोन दबो? FeCN6 केते माइनस 3 माइनस. यस एटा तमर आउ भांगी बनी, एटा नॉन आयनाइजेबल. यस कॉम्प्लेक्स भांगी बनी जोटा तमर स्क्वायर ब्रैकेट भितरे थाए सेटा होची नॉन आयनाइजेबल. सेटा आउ तमर भांगी बनी. यस ताले I वैल्यू केते हबो? केते हबो I वैल्यू? को केते हबो? एडे रहले एडे तीनटा, ये गोटे.
केते हला हां केते हला यस 3 + 1 डिवाइड बाय एटा गोटे टोटल यस केते हला 4 yes or no so option which option C option C is correct बुझिला next question number 9 the unit of elastic constant kb this is kb कौन हबो एटा अछि तमर केल्विन केजी मोल इनवर्स एटा तमर अछि केजी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एटा तमर अछि केल्विन मोल केजी इनवर्स एटा तमर अछि मोल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स कोटा हबो कोटा हबो A yes the correct answer will be sorry this one ha kg अछि ठीक distance लिख देछि the correct option will be kelvin kg mole inverse A yes very good जगत जननी प्रियदर्शिनी सुभस्मिता सोनाली very good so ए टाइप रो क्वेश्चन तमर एग्जाम रे ही आसीबो next question को जिबा which of the following aqueous solutions should have the highest freezing point 0.01 molar NaCl 0.01 molar this is NaSO4 Na2SO4 this one is glucose this one is AlCl3 4 कोटा आगो जल्दी जल्दी रेस्पोंड करो देखिया कोटा तमरा आंसर आसुची ए आंसर अच्छा अच्छा this is NaCl this is your ionic compound होगी ना डिसोसिएट ए कोन दब Na + Cl - I वैल्यू केते आसीबो 2 I वैल्यू 2 Na2SO4 केते आसीबो 3 एटा केते आसीबो 4 एटा केते आसीबो ग्लूकोज केते आसीबो glucose is a non-electrolyte glucose urea sucrose these all are your non-electrolyte so value will be 1 I value केते 1 अच्छा पचारजी कोन highest freezing point highest पचारजी highest freezing point तार अब जारा I value जते कम हबो तार freezing point सेते yes कोड आंसर हबो C yes answer is C मन रहिला तो जोड़ा तमरो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तार वैल्यू होची 1 लाइक यूरिया ग्लूकोज एंड सुक्रोज next question osmotic pressure pi this is pi of a solution is given by the relation this is pi equals to CRT this is pi V equals to nRT this is pi equals to fraction CRT by V कोटा ठीक है B अच्छा
ओनली ऑप्शन बी ठीक हवा तमने कह कोटा हम ए हम हाँ बोथ ए एंड बी हम अच्छा नॉर्मली आमर फॉर्मूला कोची पाई इक्वल्स टू सी आर टी कोटी कोटी एम आर टी भी लिखा है व्हाट इज सी सी कौन कंसंट्रेशन यस नॉर्मली कोथरे हम एक्सप्रेस करू मोलारिटी रे ओके सो सेति में बेले बेले एमआरटी भी लिखा हुए कंसंट्रेशन ऑफ फार्मूला कौन एन बाय भी हाँ कि नहीं तुम कंसंट्रेशन और एटी मो मोलारिटी पाई नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर यस अच्छा एटा जदी v टा एपड पळेबो ए एटा हे जिवो हाँ कि ना हबो त ताले एटा भी ठीक एटा भी ठीक एटा ठीक एटा हबो ना एटा यस सो ऑप्शन सी समस्ते वेरी गुड ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रेडी isotonic solution have the same option A vapor pressure freezing point osmotic pressure boiling point isotonic कोथरे पढितला मने पकाओ कोथरे पढितला isotonic freezing point रे पढितला ना boiling point रे पढितला ना vapor pressure रे पढितला osmotic pressure रे पढितला yes it is of three types isotonic hypertonic hypotonic yes मने पड़ला isotonic माने कौन same yes iso means same अच्छा the pi 1 equals to pi 2 isotonic रे कौन है जी pi 1 equals to yes r pressure जति तार pressure भी osmotic pressure सेतिकी so option C. C is the correct option. Next. When a red blood cell is placed in the pure water, it will shrink, it will swell and burst, remains unaffected, dissolve completely. एटा भलो कि भाबी के आंसर दबा सो गोटे आम रेड ब्लड सेल नहीं कौन रखुचे प्योर वाटर रे सपोज आ भीतर वाटर नहीं सपोज दिस इज अ सेल कौन हम कौन हम अच्छा ये छाड़ी दियो आ कथा छाड़ी दियो नॉर्मली गोटे तुम किसमिस रेजिन यस पानी रे तुम बतुरे रख कि नहीं पूर्व बतुरे रख कौन हुए साइज रे कौन हुए स्वेल करे पानी ता भीतर को बसी जाए हाँ कि ना ऑप्शन सी श्रुति ऑप्शन सी सुभस्मिता ऑप्शन सी प्रियंका सी प्रियदर्शिनी ओके समस्त कहते ऑप्शन सी कौन हम ठीक से कह बी ना सी किसमिस तुम कहल कि मोर बढ़ी जाऊँ यस पानी ता भीतर को पड़े जाऊँ साइज बड़ हो जाऊँ ऑप्शन डी बी सोनाली ऑप्शन बी सो नॉर्मली कौन हम ना तुम जेहेतु ऑस्मोसिस सेठी होउची तामाने कौन हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंटर करिवो कि नहीं जेते बेले सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर करिवो सॉल्वेंट एटी मोर की अछि वाटर वाटर ता भीतर पसले कौन हम फुलिवो अधिका फुलले कौन हम फाटी जीवो यस सो दिस इज कॉल्ड हेमोलिसिस यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर Coming to question number 15, the reverse osmotic pressure process is used for desalination of seawater, concentrating sugar syrup, purifying blood, then dialysis, measuring molar mass.
जल्दी जल्दी कह कौन हम बी ए सोनाली ए प्रियंका प्रियंका ए अच्छा ऑस्मोसिस माने कौन लोअर कंसंट्रेशन को हायर कंसंट्रेशन को जाउची ना हायर रो लोअर को आसी हायर रो लोअर को आसी ना लोअर रो हायर को आसी हायर रो लोअर को आसी नॉर्मली तमर कौन होची सपोज करू जे तमे देख this is my semi permeable membrane SPM हैला एठी जदि मोर लोअर कंसंट्रेशन अछि कंसंट्रेशन जदि लोअर अछि कंसंट्रेशन लोअर माने कोन सॉल्वेंट अधिका सॉल्यूट कम राइट सेमी परमेबल सेमी और दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल ता माने कोन से किछि जिंस सिलेक्ट करि कि दबो यस सब छाड़ीबनी कौन दब ओनली सॉल्वेंट दब यस एठु कौन हम ना सॉल्वेंट ओनली पास करिवो कोठी लोअर रो हायर को जीव यस लोअर रो हायर को जीव लिसन एडा ला ऑस्मोसिस वाला यस जेति कि नॉर्मल प्रेशर लागला दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज ए साइड रे मु रखिली गोटे पिस्टन टे रखिली ना एटी प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर देली हैला सपोज पाई प्लस एक्स एटीएम एक्स्ट्रा प्रेशर देली एंड एपटे मु रखिली हाई कंसंट्रेशन रे मोर रखिली कोन सलाइन वाटर माने कोन सी वाटर हैला सतरे तमरो सॉल्ट भी रहउची अदर इंप्योरिटीज भी रहउची हां कि नहीं अदर इंप्योरिटीज रहउची एक्स्ट्रा प्रेशर देकी ताको कोन करबे रिवर्स डायरेक्शन रे देबे रिवर्स डायरेक्शन रे देबे एटी जेति के प्रेशर लागुतला एपर तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे गला ऑस्मोसिस रो ऑपोजिट रिवर्स ऑस्मोसिस सो एपटे मोर कोन जे ओनली तमे जानते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली कोन करबे सॉल्वेंट पास करबो राइट सॉल्वेंट पास कले ओनली खाली पानी गुडा जीवो तमरो सलाइन वाटर रो खाली पानी जीवो इंप्योरिटी गुडा ए साइड रहि जीवो हां कि नहीं तो ए पटे तमरा फ्रेश वाटर तमे कलेक्ट करि परिबो यस बुझिला सो कोटा हबो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर एमदी तमरा कोन होची देखो आमा पाखर बहुत कम सोर्स अछि तमरा फ्रेश वाटर रो हां कि नहीं अन फ्रेश वाटर बहुत सारा पोल्यूट भी गलानी सो गोटे स्टेज आसीबो कि जोतरे कि हमको सी वाटर को कन्वर्ट करिया पड़िबो नॉर्मल तम घरे भी जो एक्वागार्ड लागुची कि नहीं से लिखा है आरो माने कोन रिवर्स ऑस्मो तमदी एक्सटर्नल प्रेशर दउछ से कोन करूची ना तुमको प्यूरिफाई करी पानी दउछ बुझिला सो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर वेरी गुड नेक्स्ट the value of Bantam's factor I this is I for benzoic acid in benzene when it undergoes dimerization it will be greater than 1 less than 1 equal to 1 0 dimerization माने दीटारो गोटे होउची यस बेंजोइक एसिड रो कोन फार्मूला राइट जतरे मोर 100% एसोसिएशन एटी होउची सपोज तले कोन हबो C6H5C
दुईटार गोटे होउची हाँ दुईटार गोटे होउची अच्छा आफ्टर केतेटा आइची गोटे बिफोर केतेटा थिला दुईटा ताले आई वैल्यू कोन हबो आई वैल्यू 1/2 greater than 1 1/2 is greater than 1 a समस्त आंसर आछि a so this is 1/2 कोडी अछि ऑप्शन less than 1 and approximately 0.5 next question which concentration term is independent of temperature molarity molality normality formality molality अच्छा molality रे कोन भई हबो वॉल्यूम नाही यस तो वॉल्यूम और कोन हबो टेम्परेचर मु देली पळेबो यस और नो बट मास रो कोन हबो मास तो सेम रहइबो ना सो ऑप्शन विल बी molality ऑप्शन सी रेडी नेक्स्ट next question is partial pressure of a gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution this is which law Raoult's law Dalton's law Henry's law Van't law Dalton's law partial pressure of a gas in vapor phase कोड आबो को Raoult's law कौन कहूची partial pressure is directly proportional to the mole fraction yes so एटी पछे gas पता कोड आबो ऑप्शन बी yes ऑप्शन बी जेतेबेले गैस कथा आसी जीवो मन रखितो सबले हेनरीज लॉ हैला डाल्टन्स लॉ रे एडिशन होतला हैला सपोज तमरो प्रेशर होतला PA रो प्रेशर PB रो पार्शियल प्रेशर दिजन जाग तुम एडिशन करथली कोन होतला PA + PB PA रो वैल्यू कोन रहउतला this is P total yes then P total will be this is equals to P naught A zeta A मन पड़ला P naught B zeta B so this is Dalton so it हबो तमरा Henry's law very good next question solubility of gases in liquid generally decreases with increase in temperature increase in pressure addition of catalysis decrease in the surface area solubility of gas in liquid ओडा लिक्विड रे गैस नउच कोन हबो नॉर्मली तमे ओडा कथा को मु जते बेले टेम्परेचर जदि मु बढ़ेइली सॉल्यूट रो कोन हबो पानी चीनी नै पानी को गरम करली तो कोन हबो अधिक रु अधिक चीनी ऐड करि परिबी हां कि नै सॉल्युबिलिटी सेठी बढ़ी परिबो बट मन रखिता गैस केस रे सबले ऑपोजिट हबो टेम्परेचर बढ़ेइले कोन हबो सॉल्युबिलिटी कम ही जीवो कोड हबो एटा एक्सोथर्मिक हैला so this will be increases with temperature yes decreases with केते डिक्रीज करिवे increases in temperature option A maximum boiling point azeotrope is found by the system acetone carbon disulfide acetone chloroform benzene toluene n-hexane n-heptane जल्दी जल्दी आंसर को देखिया ऑप्शन ए हबो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप ता माने तमरो राउल्स लॉ जतेले कहबो तरे कोन शो करिवो
पॉजिटिव ना नेगेटिव डेविएशन शो करिवो को पॉजिटिव शो करिवो जेतल नेगेटिव हबो सेतल हबो मैक्सिमम नेगेटिव हेले मैक्सिमम ऑप्शन ए ये को ऑप्शन ए ऑप्शन बी सी डी जल्दी जल्दी को कोडा हबो ऑप्शन बी एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म दी जन भीतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहउची एंड दी जाक तमर कोन करिवो एटा मैक्सिमम बॉइलिंग अछि माने कोन देखेबो नेगेटिव डेविएशन देखेबो यस सो ऑप्शन बी yes option B very good next minimum boiling azeotrophs eta tar opposite hobo seta maximum thila eta minimum hobo minimum boiling azeotrophs is found by the solution water nitric acid ethanol water acetone chloroform water and hydrochloric acid जोटा पॉजिटिव डेविएशन शो करथिबा आ भीतर कोडा पॉजिटिव डेविएशन शो करिवा मने अछि यस बी ऑप्शन बी वेरी गुड प्रियंका राधा ऑप्शन बी नेक्स्ट an example of solid solution where the solute is a gas solid solution गोटे solid थिबो गोटे gas थिबो which one the first one is camphor in nitrogen gas solution in hydrogen in palladium yes it's a gas and this is a solid which option yes समस्त कहते बी yes the option is B next relative lowering of vapor pressure is a easiest one colligative property intensive property thermodynamic property non colligative property कौन हबो colligative property अच्छा एठी जदी आसे मोर lowering in vapor pressure relative lowering in vapor pressure colligative property osmotic pressure depression in freezing point colligative property yes so option A very good next relative lowering of vapor pressure is equals to mole fraction of solvent mole fraction of solute molarity of solution molarity देखो बोलो से क्वेश्चन टा देखो yes mole fraction of solute तमरा कोन थला relative lowering of vapor pressure formula कोन थला P naught A minus PA divided by P naught A right this is equals to zeta A so what is zeta A mole fraction yes or no option B very good next atmospheric pollution is generally measured in ppm molarity normality yes what is ppm parts per million yes very good Priyanka next question dissolution of a gas in liquid is always accompanied by increase in entropy decrease in entropy zero entropy positive enthalpy change B कौन हम पिला माने जेतबे तुम गोटे गैस को गोटे लिक्विड रे पुरे के रखियो कौन हम रेस्ट्रिक्ट तक कर देलो से एते बुली परिबो एंट्रोपी मींस व्हाट रैंडमनेस यस कमी जीवो तो कौन हम
Decrease in entropy? Yes. Decrease in entropy. Next question. Aquatic species are more comfortable in cold water than warm water. कौन भाई? Yes, previous question में discuss करले. Option B. Oxygen solubility higher in cold water, oxygen solubility lower in cold water, carbon dioxide is more abundant, water pressure is higher. A. जेते तमरो टेम्परेचर कमिबो सॉल्युबिलिटी बढ़िबो तेणु अधिका ऑक्सीजन जीवो अधिका ऑक्सीजन देले जो माने एक्वाटिक एनिमल फ्री रे ब्रीथ करि परिबे यस और नो ऑप्शन ए ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इज हायर इन कोल्ड वाटर बहुत तरह क्वेश्चन ऐसे नेक्स्ट which of the following has the highest value of Henry's constant this is kh helium hydrogen nitrogen oxygen जोड़े इनट हेइतो सेटा हबो को ए वेरी गुड विश्वजीत राधा ए Subhashmita very good so option will be A right as inert gas eta kon habo highest value of Henry's constant next the total vapor pressure of an ideal binary solution containing liquid A and B kon habo easiest one ko eta lekha hochi kon mu taku koi douchi this is P equals to PA zeta A plus PB zeta B. This one is P equals to PA zeta B P not B zeta B. This one is P equals to this is P not A plus P not B. This is P equals to KH into zeta. What I have? ATPAH or P not H. What I have? Option A. Yes. Option is A is the correct answer. Next question. For a non-ideal solution showing negative deviation, कौन देखो जी? Negative deviation, non-ideal solution. Which relation is correct? Delta H mixing is less than 0. Delta H mixing is greater than 0. Delta V mixing is greater than 0. This is less than 0. Delta S mixing. What about? A. Yes. जेहेतु नेगेटिव डेविएशन देखो जी कौन हबो नेगेटिव माने 0 टा ताटू बड़ होइतिबो हो कि नहीं 0 टा बड़ होइतिबो ताटू सो दिस इज ऑप्शन A. Next, molar elevation constant Kb. This is Kb. Depends upon nature of the solute, nature of the solvent, concentration of solution, temperature of solution. First of all, this is a colligative property. हाँ कि ना पिला माने हाँ colligative property कहाँ पर depend करे को nature of solute ऊपर depend करे सब बड़े नंबर ऑफ ऊपर डिपेंड करे मु यूरिया संगे ग्लूकोज यूरिया संगे एक्स वाई जेड जहाँ मिसई देवी किछि फरक पड़िबनी बट केते नंबर अछि यस सो कोन ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ का बराबर
सॉल्यूट रो नेचर ऊपर डिपेंड करिवो नाही बट व्हाट अबाउट सॉल्वेंट सॉल्वेंट ऊपर तो डिपेंड करिवो ना यस सो ऑप्शन बी समस्त कहते ऑप्शन बी yes it will be option B. Next question, the depression in freezing point TF is directly proportional to molarity molality mole fraction normality कौन फॉर्मूला थला मोर del TF equals to KF into molality small m molality हाँ कि नहीं ऑप्शन बी मोलालिटी यस बुझलो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ मोलालिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड the molality को मैं डबल करूची the value of cryoscopic constant kf कौन हबो हाफ हे जिवो डबल हे जिवो अनचेंज हबो 4 टाइम्स हे जिवो कौन हबो को जल्दी जल्दी कहो ऑप्शन बी कौन हबो सी yes it will be remain unchanged तमे मोलालिटी बढ़ाओ कमाओ जा करछ करो it will be remain unchanged option C. Next, which of the following expression represents Van Tuff's factor? Van Tuff's factor I. कोड़ा वो? एटा देइचे normal molar mass by abnormal molar mass. एटा देइचे abnormal molar mass by normal. एटा देइचे normal by abnormal. एटा देइचे observed colligative property by calculated colligative property. बी हबो बी रे कोन देछि abnormal by normal abnormal by normal ऑप्शन सी देखो जी ऑप्शन सी कौन हम नॉर्मल तमे जानि छ नॉर्मल बाय एबनॉर्मल यस और नो नॉर्मली केते बाहर उची यस एबनॉर्मली आउ जति म कैलकुलेट करूची तले केते बाहर उची यस हां कि नहीं एटा ही फार्मूला so this will be option A option A next when mercuric iodide is added an aqueous solution of potassium iodide the freezing point कौन अब increases decreases remain change first decreases then increases बोले से क्वेश्चन पढ़ो पिला माने तमे को कौन अब एटा option C remains unchanged so जते बेले तमरो
मर्क्यूरिक आयोडाइड कोथे ऐड हबो पोटेशियम आयोडाइड से गोटे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवो यस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिवो तो कौन हबो एटा फ्रीजिंग पॉइंट कौन हबो डिक्रीज करिवो यस बी so it will be option B. Next, the number of moles of solute present in 1 kg of solvent is known as easy was kg mass आसीगला कौन हम मोलालिटी ऑप्शन B. Next, which of the following salt solution has a Venter factor close to 2 under normal dilution? This is NaCl, this is CaCl2, calcium chloride, this is aluminium sulfate Al2SO4, this is glucose. NaCl. Question देछि कोन which of the following salt solution has a Venter factor close to 2 हेतियो NaCl के तब Na plus plus Cl minus 2 एटा हे जिवो केते 3 एटा हे जिवो केते Al2SO4 3 एटा 1 तो मते दरकार केते कोडाबो NaCl केते इजी क्वेश्चन देछि करि परिबो तो the property of flow of solvent next question the अच्छा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जत्ते बेले कथा उठिबो सेटा होची ऑस्मोसिस यस ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन the pressure required just to stop the flow of solvent through a semi permeable membrane vapor pressure osmotic pressure hydrostatic pressure atmospheric pressure को osmotic pressure simple yes option B very good next question degree of dissociation alpha in terms of Vanter's factor and the total number of ions कौन हबो गोटे फॉर्मूला थिला alpha equals to I minus 1 by n minus 1 yes थिला कि नहीं को ऑप्शन टा हबो को yes I minus 1 by n minus 1 option A. Next question an ideal solution is found when two components are mixed such that ideal solution होची question ठीक से पढ़िबो ideal solution Raoult's law follow करिवो yes दुईटा components अछि mixed in such a way कोन हबो del H mixing and del V mixing 0 del H mixing and del V mixing is less than 0 this is greater than 0 this is entropy equals to 0 कोडा हबो इजी क्वेश्चन आराम से तुम माने करि परिबो हां ऑप्शन ए सब 0 yes very good विश्वजीत हाँ एंट्रोपी तमरा डेल एच मिक्सिंग और डेल वी मिक्सिंग ए दिरा तो सब तमर यो ता माने तमरो वॉल्यूम आ तमरो एच कोन होइल एंथैल ना which of the following gases has the lowest solubility in water HCl
NH3, this is NH3. This is HCl, this is helium, this is SO2. For it? Yes. It's a noble gas, inert gas. Option is A, B, B. कौन हो पिला माने जल्दी को कमेंट सेक्शन में को C. Yes, very good. C. Option is C. Next, the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure equals to 0, 100 mmHg atmospheric pressure, vapor pressure of solute. Boiling point टा कौन हबो सेते atmospheric pressure सहित समान हे जिवो. Yes or no? को ऑप्शन टा हबो कि कहलानी A. 0 हबो ना 0 हबनी. बॉइलिंग पॉइंट तुम डेफिनेशन ही कहूँ जिते बेले तुम टेम्परेचर टा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित समान. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यस, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Which unit of concentration changes with change in temperature? Molarity, molality. What? Question goes which of changes with change in temperature? Molality constant रहउतला किछ होनथला. ताले कोन हबो? Molarity. Option सब बेले देखि के मारिबो नले जते टिके एपट से पड़ेले गोटे जे अल्फाबेट एपट से पड़ेले काम खत्म हैला. So molarity. Next question. What happens to the boiling point of water when common salt is dissolved? Option A, B, C, D. A. Normally तुम जते गोटे कोन को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करिवो कोन हबो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो. हां कि नहीं? सो दिस विल बी इंक्रीजेस. ऑप्शन A. बहुत इजी क्वेश्चन अछि. नाउ कमिंग टू अगेन एसियल हम सेमी परमेबल. सेमी परमेबल कथा उठिबो माने ऑस्मोसिस. यस, membrane is used in the osmosis allows the passage of solute jivani, solvent molecules only, both solute and solvent, neither solute nor solvent. Option B. ये कहूची B. देखिवा कौन कहउछन पिला माने. B. Very good. So only solvent molecules pass kari paribo. Option B. Next question jiba. Which of the following solution will have the highest freezing point depression? 0.1 molar urea, 0.1 molar glucose. This is Al2SO4. Al2SO4. This is NaCl. Sodium chloride. Wow. जेते तमर आई वैल्यू बढ़िबो सते कोन हबो बढ़िबो. हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. यस. आरो केतरा यूरिया पई आई वैल्यू. ऑप्शन बी. ये कहूची ऑप्शन बी. डी. अच्छा, यूरिया पई आई वैल्यू कोन हबो 1. नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ग्लूकोज इज आल्सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1. देन NaCl पई कोन हबो 2. आप पई केते हबो. यस, दीटा आरो गोटे केते हबो
L2SO4 रो होल 3 अच्छा तीनटा अछि एपड़ दिटा अछि यस अधिका कोटा होची एटा मोदले खाली एसो पटले 3 ही थांदा तो तीनटा अछि कोटा हाईएस्ट हबो सी ऑप्शन सी वेरी गुड प्रियंका शुभस्मिता प्रियंका मल्लिक सोनाली साहू very good so option C will be the correct answer next colligative properties are the most useful determining what characteristic of macromolecules macro means bada size yes macromolecules melting point calculate करने में colligative property यूज हुए और molecular mass crystal structure density जल्दी जल्दी कह आउ केतेटा क्वेश्चन रहिला आउ दुईटा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सारिबा कह नो बी ऑप्शन बी वेरी गुड सोनाली वेरी गुड सिमरन प्रियंका ऑप्शन बी सो मॉलिक्यूलर मास बाहर करिया पे कोन यूज है colligative properties got it next azeotrophs are binary mixtures having different composition of liquid and vapor phase same composition in liquid and vapor phase zero boiling point constant freezing point question टा टिके भलो की पढो azeotrophs कोन अब सेम composition दम सेम liquid and vapor phase दीटा थिबो but composition same थिबो कोतरे yes and it has a fixed or constant boiling point option B very good option B is the correct answer same composition in liquid and vapor phase next last question which law explains the solubility of gases in liquid quantitatively Raoult's law Henry's law Boyle's law Charles law कोडा तमे पढी छ सेकंड ईयर Boyle's Charles law अछि नै खाली तम Raoult's law Henry's law अच्छा कहले त गैस कथा उठी बतरे कोन करिवो यस गैस कथा माने तमरो Henry's law ना solubility of gases ताले सॉरी गला हमर 50 टा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थिला ए टाइप रो क्वेश्चन ही तमर एग्जाम रे आसीबो प्रैक्टिस करो नेक्स्ट हमें आउ 50 क्वेश्चन ने के आसीबा ठीक अछि पिला माने थैंक यू